रहे हैं स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल एनकाउरी। तो स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल एनकाउरी में ऑलरेडी हमने 2 स्टेप्स डिस्कस किए। आज हमारा तीसरा स्टेप है ड्राइविंग कंक्लूजन्स। तो हमने बेटा जब डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम इस डेटा की एनालिसिस करते हैं। मगर ये एनालिसिस हम बेटा करते हैं बाय ए मेथड विच इज नोन एज स्टैटिस्टिकल मेथड। उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। आपने 10th क्लास के मैथ तक पढ़ा होगा। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, या फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इन्हीं टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं इस डेटा की एनालिसिस के लिए। सिंपल एग्जांपल, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहां से हम लेते हैं बिहेवियर, यहां से हम क्या लेते हैं, और बेटा यहां से हम लेते हैं कौन सा डिटरमिनेंट हमें निकला जिसने बिहेवियर को इफेक्ट किया। क्योंकि बेटा हमने कहा डिटरमिनेंट्स हमें ढूंढने हैं, कॉजेस हमें ढूंढने हैं कि बिहेवियर को किसने प्रॉब्लम की। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां से बनाएंगे हार्श क्लेमेंट, हार्श क्लेमेंट मतलब ऐसा क्लेमेंट जो बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है, या हार्श एनवायरनमेंट मतलब बच्चे को जब अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला उसका बिहेवियर खराब होगा। हम कहते हैं स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर नॉर्मल करो दिखा रहा, ठीक है, मगर जो ही उसको हमने किसी और एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया, ये बिहेवियर क्या हो गया, इंक्रीज, एबनॉर्मल बिहेवियर। इसी तरह जो ही यहाँ की कंडीशन बढ़ गई, ये और इंक्रीज हो गया, ये और इंक्रीज हो गया। तो ग्राफिकली हम दिखाते हैं हमारा जो डेटा हमने एनालाइज किया, ग्राफिकली हम दिखाते हैं कि उस डेटा के अंदर कैसे हमने इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है बेटा, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। लिखो आप बेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज डेटा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज डेटा so collected through the use of statistical procedure, statistical procedures to understand what the data mean, full stop. This can be achieved through graphical representation. Such as preparation of pie chart, comma bar diagram, comma cumulative frequency, comma mean, mode, median, etc. Mean, mode, median, etc. ठीक है, and by the use of different statistical methods, या जितनी भी बातें statistical methods हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। The purpose of methods, the purpose of analysis is to verify a hypothesis, and draw conclusions accordingly. draw and draw conclusions accordingly. तो हम कहते हैं बेटा इस स्टेप का मेन मकसद क्या होता है, हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना। मतलब
अगर आपने बेटा अंडरस्टैंड किया था बिहेवियर में चेंज आने की वजह क्या है, हम बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो आपने अपनी जगह ये हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है बेटा। अब आप स्टैटिस्टिकल मेथड से इसको प्रूव करते हो कि जो ही हमने पहले दिन बच्चे को क्लेमेट में लाया, दूसरे क्लेमेट में उसको एडजस्ट किया, उसके बिहेवियर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब आपको प्रूव करना है आपकी जो रिसर्च है वो करेक्ट है। इसीलिए हमें किसको वेरीफाई करना है, हाइपोथेसिस को। चौथा स्टेप, रिवाइजिंग द रिसर्च कंक्लूजन। रिवाइजिंग द रिसर्च कंक्लूजन। Revising the research conclusions. The psychological research, may have begun the study with a hypothesis. The study with a hypothesis that there exists a relationship, between hypothesis and conclusion. Hypothesis and conclusion. आपको बेटा मालूम है रिसर्च तभी सक्सेसफुल होगी जब जो हमने हाइपोथेसिस बनाया होगा वो वेरीफाई होगा किससे, कंक्लूजन से। हमारा हाइपोथेसिस और हमारा रिजल्ट सेम आए, तब जाके हम कहेंगे ये जो रिसर्च है ये सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद इन दिस सेटअप the main focus of a researcher has to see whether the conclusions supports the hypothesis or not. क्या हमारा जो रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ दे डू, अगर वो कर रहा है, द एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस can confirm the theory of research and your research is successful. Full stop. If not, अगर अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, इफ नॉट, द रिसर्चर विल रिवाइज और स्टेट an alternative hypothesis or theory and again test it based on new data collection. देखो बेटा सारी रिसर्च नहीं, based on new data collection and new draw conclusion and new
drawn conclusion which may be verified by future researchers thus research is a continuous process इसीलिए बेटा हम क्या कहते हैं, रिसर्च जो है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस नहीं है जिसके जो कभी खत्म होगी, ये बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद है हमारा टॉपिक बेटा ऑल्टरनेटिव पैराडिज्म ऑफ रिसर्च। मतलब अगर अब हमें ऑल्टरनेट की जरूरत पड़ी, अगर हमारी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुई, ऑल्टरनेटिव पैराडिज्म PARADIGMS ऑफ रिसर्च। Psychologists suggest that human behavior is predictable. And should be studied by many methods adopted by sciences like physics, chemistry and biology. Full stop. We know that behavior is caused by internal and external forces and can be observed, measured and controlled. The modern psychologists of 20th century restricted itself to the study of overt behavior. बेटा overt behavior means external behavior, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा मैक्सिमम स्टडी हम किसकी करेंगे, ओवर्ट बिहेवियर की, ठीक है बेटा। दैट इज द बिहेवियर दैट कुड बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, it did not
focus on personal feelings. Personal feelings, experiences, comma, meanings, etc. Comma, meanings, etc. Meanings? हाँ उसके बाद हम बेटा कहते हैं इन रेसेंट ईयर्स a different method in recent years a different method known as interpretive 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 has emerged. It emphasizes on understanding over explanation and prediction full stop. It takes the stand that in view of complex and variable nature of human behavior and experience its method of investigation should be different from the method from the method of investigation of the physical world. तो बेटा ऑल्टरनेटिव पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च वो हमें बोलती है साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, एक्सपीरियंस को, और ये जो ह्यूमन बिहेवियर है बेटा ये ह्यूमन बिहेवियर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स से होता है जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मगर 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट का सारा फोकस किस पे रहा? उनका बिहेवियर रहा ओवर्ड बिहेवियर पे, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उन्होंने कहा पर्सनल फीलिंग या एक्सपीरियंस को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में उन्होंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है इंटरप्रेटिव, ठीक है। ये मेथड किस पे फोकस करता है? ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन, जो आपने प्रिडिक्ट किया, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उस पे। और बेटा ये हमें बोलता है ह्यूमन बिहेवियर जो है ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये वेरिएबल है, इसीलिए इसका मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अलग होना चाहिए। किससे? फिजिकल साइंस से, ठीक है। तो कल हम देखेंगे इन्होंने कौन सा मेथड डिफरेंट बताया।